Hello students, most welcome to the third lecture of applicable mathematics third. So today I will discuss some problems which is based on the relation on a set. तो उसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें देखना होगा कि किस टाइप का रिलेशन है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन हमारे पास इन तीनों तरीके के रिलेशंस को शो करता है तो वो हमारे पास कैसा रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विवेलेंस क्लासेस प्रॉब्लम कि कैसे हमें इक्विवेलेंस क्लासेस को लिखना होता है और देखना होता है। तो हमने उसके ऊपर एग्जांपल्स भी करे थे जब हम डिफिनीशन को पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। तो आज हम ढेर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग विद मी। ओके, सो रिकॉल कर लेते हैं डिफिनीशंस ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। तो यहाँ पर हम एक बाउंड्री बनाते हैं, लेट्स या दिस वन। सो कोई रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है, इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए इन ए। हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करता हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। ओके, एंड इफ a is related to b, this should imply that is b is also related to a. तो this type of relation is called symmetric, है ना। एंड ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड दिस इज बी इज रिलेटेड टू सी, दिस शुड इंप्लाई दैट इज ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी, है ना। तो ये हमारे पास होता था ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। और अगर ये तीनों प्रकार के रिलेशन शो होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन, है ना, एक रिलेशन जो तीनों प्रकार का रिलेशन है, तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो आइए वन बाय वन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमको करानी है हम सारी पहले से लिख रखे हैं ताकि हम और अच्छे से डिटेल में समझा पाए। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस प्रॉब्लम। तो इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, देयर आर थ्री एलिमेंट 1 2 3 एंड रिलेशन R1 R2 एंड R3 ऑन ए आर डिफाइंड एज, है ना। थ्री रिलेशन यहाँ पर इन्होंने डिफाइन करा है। इन अ रिलेशन R1 we just taken the pairs, 1 is related to 2 and 2 is related to 1 and 3 is related to 3, and clearly you can say R1 is a relation on A, it means it will be the subset of A cross A, clear। and इसी तरीके से R2 will be the subset of A cross A and this is also a subset of A cross A। तो this is the relation R1 R2 and R3 on the set A। ओके, तो इसमें R2 के अंदर पेयर्स लिया है 1 1 3 3 3 1 1 2 एंड 2 1, एंड R3 के अंदर जो रिलेशन लिया है दैट इज 2 3 3 2 2 1 3 1 1 3 एंड 2 2। ओके, सो इन्होंने क्या पूछा है, चेक वेदर R1 R2 एंड R3 आर सिमेट्रिक और नॉट। ठीक है, तो हमें चेक करना है इनमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है, कौन सा नहीं है। तो इट मींस इफ दिस कंडीशन होल्ड देन दैट विल बी symmetric। Okay, it means if A is related to B then B should be related to A। ओके, तो अगर हमारे पास हाइपोथेसिस है देन कंक्लूजन शुड बी देयर। अगर हाइपोथेसिस बिलोंग कर रही है और कंक्लूजन नहीं है तो वो हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा, दैट विल बी नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो लेट्स राइट द सॉल्यूशन फॉर इट। तो थोड़ा सा हमें राइटिंग, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हम लोग देखते हैं समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं है, बट हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू राइट द सोल्यूशन, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वो भी आपको सीखना है। तो आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लिखिएगा, पहले क्वेश्चन लिखिएगा देन राइट द सोल्यूशन फॉर दैट। जैसे हम लिख रहे हैं चीजों को, है ना, पूरा एक्सप्लेन करते हुए, है ना, रीजन देते हुए। ओके, तो फर्स्ट रिलेशन को अगर हम देखते हैं तो R1 में हम देख रहे हैं 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 1। इसका मतलब यहाँ पर 1 रिलेटेड टू 2 एंड दिस इज 2 इज रिलेटेड टू 1, दैट इज ओके। एंड ये पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, so you can say R1 is symmetric, it means जो सिमेट्रिक कंडीशन है उसको ये फुलफिल कर रहा है। ओके, सो यू कैन राइट आल्सो इन अ डिटेल। ठीक है, सो बी नोट दैट, द ऑर्डर्ड पेयर, अगर हम उनको इंटरचेंज करते हैं उनके कंपोनेंट्स का, इसका मतलब ए टू बी एंड बी टू ए,
then also exist in R1. Okay, so we note that the ordered pair, ऐसे लिख लो, ordered pairs obtained on interchanging the components are of ordered pairs belongs इन R1 के अंदर अगर कोई ऑर्डर पेयर है, उसको हम उनके कंपोनेंट को इंटरचेंज करते हैं, तो दैट इज आल्सो बिलोंगिंग टू R1, है ना। तो वो हम यहाँ पर एज ए लैंग्वेज लिख सकते हैं, दैट इज आल्सो बिलोंग टू R1। ओके, and you can just easily say that is if A comma B is in R1, okay, this implies this is B comma A is belonging to R1। अच्छा, यहाँ पर फाइनाइट सेट है, केवल 3 एलिमेंट है, तो आप इजिली आप पर्टिकुलर पॉइंट्स को लेकर भी कह सकते हो, बट इन जनरल वे अगर आपको देख रहा है और ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, तो यू कैन जस्ट राइट इन दिस लैंग्वेज जैसा हमने लिख रहे हैं। ओके, तो R1 फॉर ऑल द एलिमेंट्स A comma B, for all A comma B in A, clear? So therefore the relation is symmetric, R1 is symmetric। ओके, सो फर्स्ट जो R1 रिलेशन था उसके बारे में हमने बता दिया कि वो हमारे पास सिमेट्रिक है। अब R2 की बात करते हैं, तो R2 के अंदर 1,1, 3,3, 3,1, 1,2 एंड 2,1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3,1 तो प्रेजेंट है, बट 1,2 नहीं प्रेजेंट है। तो फॉर द सिमेट्रिक इफ 3,1 इज देयर, देन 1,3 शुड बी देयर, बट ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब R2 इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो उसका रीजन क्या देंगे, सिंस हमारे पास 3,1 प्रेजेंट है बट 1,3 प्रेजेंट नहीं है, तो R2 इज नॉट सिमेट्रिक। R2 is not symmetric, so what the reason, as you can see, as this 3,1 is in R2, but the 1,3 is not belonging to R2। okay, so this R2 is not symmetric, क्लियरली, है ना। तो एक हमको पेयर मिल जाए जो कि उनके कंपोनेंट चेंज करने पर वो बिलोंग नहीं करता है, तो दैट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, व्हाट अबाउट R3, थर्ड नंबर वाला। तो इन R3 यू कैन सी 2,3 एंड 3,2, दैट इज ओके। 2,1, 3,1, 1,3, 2,3। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2,1 प्रेजेंट है, बट 1,3 नहीं, 1,2 नहीं है ना। 2,1 है तो 1,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए फॉर द सिमेट्रिक रिलेशन, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो यू कैन से दिस R3 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, so as we can say, as this 2,1 is there, R3, but 1,2 is not belonging to R3, clear? So you can say, so R3 is not symmetric। तो कोई रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कब नहीं होगा, जब हाइपोथेसिस तो है बट कंक्लूजन इज नॉट देयर। ओके, तो दिस बी चेक्ड अबाउट द सिमेट्रिक वन। ओके, तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें लगता है समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे और एडवांस लेवल क्वेश्चन पे जाते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तुम्हारे पास क्या है। हाँ,
ओके, दिस इज क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो कलेक्शन लिया गया दैट इज ह्यूमन बीइंग्स इन अ सिटी। तो डिटरमिन वेदर द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ सिटी। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन्स हैं एक सिटी के अंदर रह रहे हैं, उन सबका कलेक्शन सेट ए के अंदर है एट अ पर्टिकुलर टाइम डिफाइंड बाई। तो रिलेशन कैसे डिफाइंड है? दिस इज द रिलेशन that at r equals to x is related to y such that x is wife of x is wife of y, है ना? तो x जो है वो y की वाइफ है, देन x विल बी रिलेटेड टू y। ओके, तो इट मीन्स दैट यू कैन से y द हस्बैंड ऑफ x, इसको दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वी हैव टू चेक दैट इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इनमें से कौन कौन सा रिलेशन है, ये किस प्रकार का रिलेशन शो करेगा? सो वी कैन इजिली सी, अगर हम इसको हम देखें, इसको समझें, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और आपका ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि अगर हमने कहा कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, तो एक्स विल नॉट द वाइफ ऑफ हिमसेल्फ या हर सेल्फ, है ना? खुद का तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, then y will be not the wife of, है ना, that will be husband of x। okay, so it means it is not symmetric। a transitive की बात करें, x is the wife of y and y is some men, तो it will be not will be the wife of someone, तो that is बट आई थिंक एक्स इज रिलेटेड टू वाई। ट्रांजिटिव को चेक करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव को थोड़ा सा डिटेल में चेक करना पड़ेगा। लिखिए लिखिए, सोल्यूशन करते हैं, लेट अस राइट द सोल्यूशन फॉर इट एंड देन वी विल एबल टू कंक्लूजन। ओके, सो फर्स्ट, क्लियरली यू कैन से इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो थोड़ा सा डिटेल में लिखते हैं। तो द रिलेशन आर इज डिफाइंड बाई the relation R on the set A of human beings is defined by in this way that R is just equal to x is related to y such that x is wife of y। Clear? So consider any x which is belonging to A, okay, then x is not a wife of herself, okay, so you can say, then you can just say x is not the wife of x, okay, so this implies you can easily say that x comma x is not belonging to R। ठीक है, तो this implies R is not reflexive। समझ पा रहे हैं आप लोग? इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो इफ यू आर सेइंग कि x is related to y, it means x is the wife of y, but y will not the wife of x ना, y will be the husband of x, okay, so it is not symmetric। so if you can just say if x and y is belonging to A are such that that is your x comma y is belonging to R, you can just say x is wife of y, ठीक है, then y cannot be wife of x ना, cannot be
wife of X. Clear? So this implies, you can say, this implies this is Y comma X is not belonging to R, and this implies this is R is not symmetric. ठीक, तो इट इज आल्सो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस में दो चीजें चाहिए होती है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू एक्स। तो यहां पर एक्स वाई से रिलेट करता है, बट वाई विल नॉट रिलेट टू एनी टाइप ऑफ जेड, किसी जेड से रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि वाई इज अ हस्बैंड, वाई इज अ मैन। तो दैट विल बी नेवर बी वाइफ ऑफ एनी अदर पर्सन। ओके, तो इट मीन दैट कि ये हमारा जो ट्रांजिटिव की कंडीशन है उसको वायलेट नहीं करता। ट्रांजिटिव कंडीशन वायलेट कब होगी? जब हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करती है। इट मींस ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, and then A is not related to C, then a relation is not transitive। ठीक है, अगर हमारे पास दोनों हाइपोथेसिस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, देन वी नॉट टॉक अबाउट कंक्लूजन, तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। तो यहां पर ये रिलेशन कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। ओके, वी कैन थिंक अबाउट इट, और हम इसको लिख भी दे रहे हैं यहां पर। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट symmetric, but it is transitive, so you can just say here. However, the relation R is transitive, is transitive। Clear? So कैसे? You can just say, if you are saying if X comma Y is in A, are such that that X comma Y is related to R, this is X is wife of Y, then you can say, then Y being male, a male cannot be the wife of any जेड इन ए। ओके, किसी और का से वो रिलेट ही नहीं करेगा, रिलेट नहीं करेगा, पर तो दोनों हाइपोथेसिस की कंडीशन वो है ही नहीं हमारे पास, तो हम कंक्लूजन की बात ही नहीं कर सकते। इस केस में हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट some x y z in A such that this is x is related to y and y is related to any z। ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा। बट एक्स इज डज नॉट, ये कंडीशन को, ये तरीके कंडीशन कभी आएगी ही नहीं। तो यू कैन जस्ट से दिस इंप्लाइज द कंडीशन इज नॉट वैलिड, द कंडीशन of transitivity is not validated, है ना, वो कंडीशन हमारी फेल नहीं हो रही है। फेल नहीं हो रही इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, इज नॉट वैलिडेट्स। ओके, दिस इज नॉट वैलिडेट्स। नॉट वैलिडेटेड। ओके,
So it means that this relation is transitive but not symmetric, not reflexive. ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आपको सोचना होता है, चीजों को देखना होता है। सो यू जस्ट डू लाइक दैट। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती। तो एक सेकेंड। हाँ, दो प्रॉब्लम सॉल्व गई, थर्ड नंबर। ओके, सो इसमें क्या बोला है, इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल वर्ड्स इन अ इंग्लिश डिक्शनरी। है ना, एक इंग्लिश डिक्शनरी है, सारे वर्ड्स का कलेक्शन है ए के अंदर। ओके, एंड द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए बाय दिस वे। तो अब वर्ड एक्स, है ना, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो वर्ड है, कोई भी वर्ड है ना। तो यहाँ पर एक्स इज रिलेटेड टू वाई। द वर्ड एक्स एंड वाई हैव एट लीस्ट वन लेटर कॉमन। अगर एक लेटर कॉमन है, कम से कम एक लेटर कॉमन है, तो वो एक दूसरे से रिलेट करेंगे। जैसे अगर हम वर्ड यहाँ पर लिख दें, सपोज दैट हमने लिखा सन, SUN, और हमने लिखा सम, SUM। ठीक, तो यहाँ पर SU एक कॉमन है, एक S कॉमन है। इसका मतलब ये जो लेटर है, सन विल बी रिलेटेड टू सम। ओके, तो ये दोनों लेटर्स आपस में रिलेट करते हैं। तो इस तरीके का रिलेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ऑल द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, वो हमारे पास सेट ए है। और एक वर्ड किसी दूसरे से रिलेट कर, तभी रिलेट करेगा कम से कम एक लेटर उनमें कॉमन हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिलेशन है। देन डिटरमिन वेदर द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन, मतलब चेक करना है ना। या तीनों रिलेशन भी हो सकता है। ठीक, रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि कोई भी वर्ड खुद के उसमें तो सारे एलिमेंट्स, सारे लेटर्स कॉमन हो जाएंगे ना, तो कोई भी वर्ड खुद से तो वो रिलेट करेगा ही करेगा। ठीक, सिमेट्रिक भी होगा। अगर हमारे पास दो वर्ड हैं, एक वर्ड के अंदर एक वर्ड में एक एलिमेंट कॉमन है किसी दूसरे वर्ड से, तो अगर उनको उलट के देखने लगोगे तब भी कॉमन मिलेगा। तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो लेटर कॉमन था फर्स्ट टू में, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे पास जो लेटर्स ए के अंदर कॉमन है वो भी सी के अंदर मिले। इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो आइए जरा इसको लिखते हैं रिटर्न रिटर्न में थोड़ा सा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं आंसर को। ओके, तो लेट्स राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। Okay, so consider some word, it is reflexive. So consider any element A in X in A. As we know, all letters will be common in a word. Okay, so as you can see, all the letters, all the letters of the word X are common or common. That is, your X is related to X, है ना, x comma x will be belonging to R। तो दिस इंप्लाई R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर? नेक्स्ट सिमेट्रिक को देखते हैं जरा। तो इफ x and y have common element, then y and x also have common element। इसका मतलब if x is related to y, then y will be definitely related to x। so you can just say here, so consider any x comma y is in A, B, such that this x comma y pair is in R. So this imply you can say that the word x and y have at least one letter common.
है ना, तभी तो वो रिलेट कर रहे हैं, वन लेटर कॉमन। अच्छा, अगर हम वाई, एक्स और वाई को देख रहे हैं, वाई और एक्स को देखें, तब भी एक लेटर तो कॉमन होगा ही होगा, कम से कम एक लेटर। सो दिस इंप्लाइज यू कैन आल्सो से द वर्ड्स, द वर्ड्स, अब वाई पहले लिख दो, क्या ही फर्क पड़ता है। वाई एंड एक्स हैव एट लीस्ट वन लेटर कॉमन। कॉमन, ओके। तो दिस इंप्लाइज वाई का माई एक्स इज बिलोंगिंग टू आर, रिलेशन के अंदर है। तो इफ एक्स इज बिलोंगिंग टू वाई, देन दिस वाई का माई एक्स विल बी देयर, एंड दिस इंप्लाइज दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो आर इज सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। But transitive, I think it is not transitive because दो a and a b से रिलेट करेगा, इट मीन्स x विल बी रिलेटेड टू y, ठीक है, एक कॉमन एलिमेंट है, और y रिलेटेड टू z, तो एनदर एलिमेंट इज कॉमन, एनदर लेटर इज कॉमन। बट जरूरी नहीं कि जो हमारा x और z में हमारे पास कॉमन लेटर मिल जाए, तो वी कैन फाइंड सम एग्जांपल। तो लेट अस सी हियर। तो यू कैन से और इज नॉट ट्रांजिटिव। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। अगर हमें कोई चीज नॉट ट्रू दिखानी है, तो उसके लिए हमें एक काउंटर एग्जाम्पल चाहिए होता है, जो हमारी चीज को फुलफिल ना कर रहा हो, है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन को फुलफिल ना कर रहा हो। सो लेट दिस वर्ड इन दिस वे, लेट एक्स वाई एंड जेड, देर आर थ्री एलिमेंट, बी द वर्ड्स। हम कुछ इस तरीके से वर्ड्स मान, पहला वर्ड हमने मान लिया बॉल, ये हमने बॉल ले लिया। दूसरा वर्ड हमने ले लिया बैट्स, ओके। और तीसरा वर्ड हमने ले लिया रन, RUN, दिस इज RUN, रन्स, है ना। ये हमने ले लिए, तीन वर्ड्स हमने ले लिए रिस्पेक्टिवली, बोले, ओके। सो यू कैन सी, ये इसमें बी वाला लेटर कॉमन हो जा रहा है, तो इजिली यू कैन से कि हमारे पास बॉल इज रिलेटेड टू बैट्स, एंड बैट्स और रन्स में एस एलिमेंट कॉमन हो जा रहा है, तो यू कैन से बैट्स इज रिलेटेड टू रन्स। बट बॉल और रन्स में कोई भी लेटर कॉमन नहीं है, इसका मतलब है बॉल बैट से रिलेट कर रहा है, बैट्स रन से रिलेट कर रहा है, बट बॉल्स रन से रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिविटी वाली जो हाइपोथेसिस तो है, बट कंक्लूजन इज नॉट वी आर गेटिंग, ओके। सो you can say easily here, then you can say, then this is x comma y is related to r, and this y comma z is related to r, it belongs to r, but this is x comma z will be not there in r, wo x will not relate to z, this implies r is not transitive, this implies r is not transitive, it's not transitive, clear, got it। तो आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ आया होगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके। बेस्ट, जस्ट अ सेकेंड। तो ओके, क्वेश्चन नंबर 4। तो वी हैव कंप्लीटेड थ्री प्रॉब्लम्स, ओके। लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में क्या है, लेट अस सी। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस, जस्ट अ सेकेंड, विजिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। ये, सो एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, है ना, एस सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है एक प्लेन के अंदर, एंड आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट एस गिवन बाय दैट आर इज ए रिलेटेड टू बी, अ पॉइंट ए विल बी रिलेटेड टू बी
if the distance between the points A and B is A and B be less than 5 units, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 5 से कम है तो वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, दे आर रिलेटिंग टू ईच अदर, देन सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो आप शो करिए कि आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर हम कोई एक सिंगल पॉइंट लें और उस पॉइंट की उसी पॉइंट से डिस्टेंस तो शून्य होगी, जीरो होगी, तो इसका मतलब दैट जीरो डिस्टेंस इज लेसर देन 5। इसका मतलब एवरी पॉइंट विल बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। अगर हम कोई पॉइंट यहां पर रखें प्लेन के अंदर और इसको हमने कह दिया ए, और ए से हम फिर ए की डिस्टेंस लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए विल बी इक्वल टू जीरो, एंड जीरो इज लेस देन 5, तो दिस इंप्लाइज दिस ए, एवरी ए रिलेटेड टू ए, ठीक है, एवरी ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब एवरी पॉइंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ इन अ प्लेन। तो इट मींस ये रिलेशन कैसा हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक की बात करें, अगर हमने कहा ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब ए और बी की डिस्टेंस क्या है, 5 से कम है। तो अगर बी की तरफ से देखो, बी और ए के बीच की भी डिस्टेंस हमारी 5 से कम होगी, इसका मतलब बी भी ए से रिलेट करता है, तो ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं, विजुअलाइजेशन देख पा रहे हैं हम, ओरली चीजों को समझ पा रहे हैं, है ना। ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव इसलिए भी नहीं है, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स ले लें, सपोज दैट हमने एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी, एक लिया पॉइंट सी, ओके, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस हमने कहा 4 है, इसके बीच की डिस्टेंस 4 है, ठीक है। और तो इसका मतलब A इज रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, बट C, A इज नॉट रिलेटेड टू C बिकॉज A और C के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 5 से ज्यादा हो गई, 5 से कम होनी चाहिए टू बी रिलेशन A रिलेटेड टू C, ओके। तो इसको थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर, इसको लिखते हैं प्रॉपर तरीके से, सोल्यूशन लिखते हैं इस प्रॉब्लम का, ओके। बट हम लोग समझ गए हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या कह रही है और कैसे हमें इसे करना होगा। So you can just have here. Okay. So let's begin with. So let's write here in a proper way. To consider any point A in S. I'm taking any point S. So as the distance the distance between points the distance between points A and B, points A and A क्या होगा, जीरो। ए से ए के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इज जीरो, ओके। तो यू कैन इजिली से which is less than which is less than 5 units, okay। So this is A is related to A, या A comma A belonging to R for every point from plane, so therefore this is R is reflexive, R is reflexive, got it, ओके। अब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो सिमेट्रिक वाला भी वही, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, सो आई एम जस्ट कंसीडरिंग, तो कंसीडर दैट एनी फॉर एनी पॉइंट्स इन द प्लेन एस such that this is a comma b is in R. It means A is related to B. It means the distance between A and B is less than 5. So you can say this implies the distance between points A and B is less than 5 units. ओके। सो अगर हम B की तरफ से देंगे तो B से A के बीच की भी डिस्टेंस हमारे पास लेस देन 5 यूनिट होगी, तो यू कैन इजिली से
the distance, this implies the distance between points B and A is less than 5 units. Okay, and this implies you can say this B comma A belonging to, whenever A comma B belonging to R, then B comma A will be belonging to R. इसका मतलब B will be related to A also. Okay, and therefore you can say this relation is also symmetric. तो ये मैं प्रूव करना था, ये दिखाना था. Therefore you can say, therefore this R is symmetric. R is symmetric. Got it? So अब हमें हमें क्या दिखाना है? इट इज नॉट ट्रांजिटिव. इसका मतलब हमको कोई एक एग्जांपल दिखाना होगा जो ट्रांजिटिविटी को होल्ड नहीं कर रहा है. ठीक है. सो वी हैव टेकिंग 3 पॉइंट्स हियर. आई एम जस्ट टेकिंग इन अ लाइन. एक लाइन में 3 पॉइंट्स ले लो. ओके. और दिस इज योर ए. हमने यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमने लिया. सपोज दैट दिस इज योर बी और दिस इज योर सी. और ए से बी के बीच के डिस्टेंस आप 5 से कम लो. और बी से सी के बीच की डिस्टेंस भी आप 5 से कम लो. और 5 से कम कुछ इस तरीके से लो कि ए से सी की डिस्टेंस हमारी 5 से ज्यादा हो जाए. ठीक. तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, काउंटर एग्जाम्पल, वो चल जाएगा जो कि प्रूव करेगा कि हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं. ठीक है. Okay, so we have 3 points A, B, C in such a way the distance between A and B is less than 5 and B and C is less than 5, and the distance between A and C is more than 5. कुछ इस तरीके से हमें 3 पॉइंट्स लेने हैं. ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि ए बी से रिलेट करेगा, बी सी से रिलेट करेगा, बट ए सी से रिलेट नहीं करेगा. और ये प्रूव करेगा कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है. तो आइए जरा ले लेते हैं पॉइंट्स. तो वी आर टेकिंग 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन. ओके. सो इसके हमने ये मान लिया ओरिजिन है 0,0, और ये हमने ले लिया 3,0. तो इन अ लाइन इसको हमने ले लिया 7,0. तो यू कैन सी कि ए से बी के बीच के डिस्टेंस 3 यूनिट हो जाएगी. 3 यूनिट्स. एंड बी से सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट हो जाएगी. 4 यूनिट्स. ओके. एंड देन ए से सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 यूनिट हो जाएगी. दैट इज मोर देन 5. और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ए है वो सी से रिलेट नहीं कर रहा, बट ए बी से कर रहा है और बी सी से कर रहा है. तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिविटी को होल्ड नहीं करा रहा है ना. तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन. तो यू कैन जस्ट राइट हियर that is consider 3 points. Consider the points. एक काउंटर एग्जाम्पल है जो हमारी ट्रांजिटिविटी को फेल कर रहा है. दिस इज 0,0 and B is your 3,0, and I'm taking this C, that is your 7,0. And you easily say the distance between hmm, so the distance, just a second. Okay. So the distance between, easily see by the distance formula, है ना. So the distance between the points A and B, points A and B is 3 यूनिट्स, है ना. ये आप देख सकते हो. एंड विच इज लेस देन 5, which is less than 5 units. And the distance between, and the distance between and the distance between the points B and C is 4 यूनिट, है ना.
वो हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट। हाँ, इच 4 यूनिट्स। क्लियर? एंड विच इज लेस देन 5 यूनिट्स। ओके, so you can just say, so this implies you can say this is a comma b is related to r, and this b comma c is also related to r, but the distance between a and c is 7 unit है ना, the distance between the points a and c is 7 units, which is more than 5 units. Okay, and it implies it is not belonging to, this implies, it implies that this a comma c, it means a is not related to c in r. So therefore this relation is not true. Therefore r is not transitive. ओके, तो हमारे पास जो रिलेशन है, वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज लेस देन 5, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी कि कैसे हमें देखना होता है, कैसे लिखना होता है ना, हमें राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव करना है कि प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कैसे लिखना होता है। ओके, तो यू जस्ट राइट डाउन एंड सॉल्व बाई सेल्फ आल्सो। ओके, आइए फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम में क्या है कि सो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट, so the relation r on the set r of real number, this is set of real numbers, number defined as r is equals to a comma b, a related to b if a is less or equal to b square. A will be related to b if a is less or equal to b square, is neither reflexive nor symmetric and not transitive. इसका मतलब हमको एग्जांपल्स देने हैं जो ये शो कर रहे हो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये किसी भी प्रकार का रिलेशन हमारे पास नहीं शो करता है। तो आइए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये भाई रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट ऐसा है जो खुद से रिलेट नहीं कर रहा है। तो जैसे अगर हम ए बराबर 1/2 ले लें, तो 1/2 विल बी नॉट लेस और इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, बिकॉज 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/4। तो इसका मतलब है 1/2 एक रियल नंबर है, बट विच इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए भी हम देखेंगे एंड ट्रांजिटिव के लिए। तो आइए वन बाय वन करते हैं जरा। तो what is the relation, the given relation, this is, यहाँ पर जो सेट ए है दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर जो हम काम कर रहे हैं वो रियल नंबर्स के सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, ए कमा बी, सच दैट दिस इज ए is v is related, is belongs to r, and we have this condition a is less or equal to b square। okay, so r is not reflexive। ठीक है, आर्ट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसके लिए कि हमको काउंटर एग्जांपल देना होगा। तो काउंटर एग्जांपल उसके लिए हम एक पॉइंट ले रहे हैं। तो टेक दिस ए इज जस्ट इक्वल टू 1/2। ओके, तो एज यू कैन से दिस इज 1/2 इज लेस और इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। You can say this is 1/2 is not less or equal to 1/4, so this is a false statement। इसका मतलब 1/2 is not related to itself, is false statement। so this implies you can say this is 1/2 and 1/2 is not belonging to r।
तो एक हमको पॉइंट मिल गया सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर। ओके, विच इज नॉट बिलोंगिंग टू इटसेल्फ, इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव है दैट एवरी पॉइंट शुड बी रिलेट टू इटसेल्फ, है ना। तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? It is also not symmetric. So you can just say here, if you are saying कि 1 is related to 2, because 1 is less or equal to 2 का square, है ना, 1 is related to 2, but 2 is not related to 1, because 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 2 will be greater than 1 ना। तो ये हमारे पास एक पेयर मिल गया, तो इजीली कैन से कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। सो यू कैन से दिस इज आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो उसके लिए भी एक हमको काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा जो ये शो कर रहा हो कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, टेक ए जस्ट इक्वल टू 1 एंड बी जस्ट इक्वल टू 2। तो इजली से कि दैट 1 इज लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो दिस implies you can say this 1 is less or equal to 4, this is a true statement, or if it is true it means this pair 1 comma 2 is in set of real is in the relation, okay, but you easily see that 2 is less or equal to 1 ka square, this is a false statement, because 2 will be greater greater than 1, है ना, तो it's false। और if statement is false, this implies this 2 comma 1 is not belonging to R। ठीक है, तो ये 1 comma 2 है, बट 2 comma 1 वहां पर नहीं है, तो therefore it is not symmetric, therefore R is not symmetric। R is not symmetric, क्लियर? अच्छा, अब ट्रांजिटिव को भी देखते हैं, ट्रांजिटिव भी नहीं है, उसके लिए भी देख लेते हैं। तो R is also not ट्रांजिटिव। तीनों चीजें दिखाना था ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो दिखा लिया, ट्रांजिट सिमेट्रिक नहीं है वो दिखा लिया, अब ट्रांजिटिव की देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, तो उसके लिए भी एक हम काउंटर एग्जांपल ढूंढते हैं। तो वी जस्ट टेकिंग हेयर, so I'm just taking here this take negative positive in the A is 1 by 3 and B is just equal to minus 2 and this C is just equal to 1 by 2। तो हमने B को निगेटिव रखा, A को हमने पॉजिटिव रखा, C को पॉजिटिव रखा, और लेट अस सी। तो यू कैन सी 1 by 3 is less or equal to minus 2 का square, because it will be what, 1 by 3 will be less or equal to 2 to the 4, तो ये 4 से a true statement है, this is true, बिकॉज 1 by 3 इज लेस देन 4 होता है। तो इसका मतलब है जो 1 by 3 है दैट इज रिलेटेड टू -2, इसका मतलब दिस इज इन आर, ये रिलेशन के अंदर है। ओके, अब हम बी और सी को देखते हैं। ओके, तो बी जस्ट है, ओके, सो आल्सो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास -2 इज लेस और इक्वल टू एनी पॉजिटिव नंबर, है ना, पॉजिटिव नंबर से तो हमेशा, तो 1 by square, अगर 1 by 2, क्योंकि सी हमारे पास 1 by 2 हमने लिया, तो यू कैन जस्ट इजिली से दिस नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर इज लेस देन, तो दिस इज 1 by 4 इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू। तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 विल रिलेटेड टू 1 by 2, तो दिस इज इन रिलेशन। बट अगर हम यहां पर आए और 1 by 3 की बात करें, तो 1 by 3 इज ग्रेटर देन 1 by 4, बट तो इट मीन्स ये 1 by 3 शुड बी रिलेट टू 1 by 2, बट यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 1 by 4। तो यू कैन जस्ट हैव 1 by 3 इज लेस और इक्वल टू 1 by 4, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज 1 by 3 ग्रेटर देन 1 by 4 होता है, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है जो 1 by 3 है विल नॉट रिलेट टू 1 by 2, दिस इंप्लाइज 1 by 3 is not related to 1 by 2, so it means that this is
not fulfilling the transitive condition, है ना? तो this therefore this relation is not transitive. Therefore R is not transitive relation. ओके, तो ये हमारे पास चेक करना था कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ओके, तो बी, उसके लिए हमें क्या ढूंढना होता है? काउंटर एग्जांपल्स, है ना? ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6। तो ओके, तो इसमें क्या है कि हम्म, तो इसमें है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन, एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और डिफाइंड बाय दैट ए कमा बी, इट मींस ए इज रिलेटेड टू बी इफ बी इज डिविजिबल बाय ए। अगर हमारे पास बी ए से डिविजिबल है देन ए विल बी रिलेटेड टू बी। जैसे कि 1 इज रिलेटेड टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 3 बिकॉज 2 3 को डिवाइड नहीं करता। तो जो हमारे पास फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है इन अ कंपोनेंट वाइज, दैट शुड रिलेट टू दैट डिवाइड टू द सेकेंड वन, इट मीन्स ए इज डिवाइडेड टू बी। ओके, तो 1 रिलेट करेगा 2 से बट 2 3 से नहीं करेगा, 3 6 से करेगा बट 3 7 से नहीं करेगा, क्योंकि 3 7 को डिवाइड नहीं करता। तो दिस इज द रिलेशन हियर। तो बी डिवाइड्स बी डिविजिबल बाय ए। ओके, तो चेक द रिलेशन आर फॉर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी, है ना? ये सारी चीजें चेक करना है कि रिलेशन कैसा है हमारे पास। तो let us write. So it is reflexive because we are taking the numbers from the natural number set, है ना? तो नेचुरल नंबर सेट पॉजिटिव नंबर होता है। एवरी नॉन जीरो नंबर इट डिवाइड इटसेल्फ, हर एक नॉन जीरो नंबर खुद को डिवाइड करती है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर विल डिवाइड टू इटसेल्फ। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर लिखिए, तो गिवन दैट that is R, which is your A comma B, such that is A and B is from set of natural number, and this B is divisible by A. This is the relation. Okay, so R is reflexive here. R is, तो पहली बात तो इसको हम देख सकते हैं कैसे। कंसीडर सम एलिमेंट ए, एनी ए, बिकॉज ए फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये नॉन जीरो होगा तो दैट शुड डिवाइड्स। तो एज ए डिवाइड्स इटसेल्फ by a. Okay, so this implies a comma a is in R set of relation के अंदर, तो R is reflexive। ओके, सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज अगर 1 2 को डिवाइड करता है तो 2 1 को नहीं करता है, वी नो दैट। तो इसका मतलब 1 कामा 2 तो होगा बट 2 कामा 1 नहीं होगा। तो इसका मतलब दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो दिस इज, यू कैन से आर इज नॉट सिमेट्रिक, है ना? तो इसके लिए कोई भी पेयर ले सकते हो। सपोज जैसे हमने यहाँ पर a बराबर 2 ले लिया है और b बराबर हमने 6 ले लिया है ना? तो यहाँ 2 6 को करता है बट 6 2 को नहीं करेगा। तो एज वी कैन से एज 6 इज डिविजिबल बाय 2, so this 2 comma 6 is belonging to R, but 2 is not divisible by 6। तो इसका मतलब 6 comma 2 is not belonging to R, but 2 is not divisible by 6। So this pair 6 comma 2 is not in
or this implies this R is not symmetric, but it is but it is ट्रांजिटिव। ये रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट इट इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो आर इज ट्रांजिटिव। इनको लिख भी दीजिए, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, यू कैन जस्ट राइट हियर, एंड दिस इज थर्ड वन। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन ना। सो वी कैन से कंसीडर एनी a and b and c which is in set of natural number such that we have this is a is related to b, it means a divides b, yeah, uh, this b divisible by a, and this b is related to c, it means this c divisible by b। okay, so आपको अब क्या दिखाना है, दिस a इज आल्सो डिवाइड c, या दिस c डिविजिबल बाय a, ये हमको शो करना है। तो दिस इंप्लाइज b इज divisible by a, okay, and this c is divisible by b। ओके, तो अगर हमारे पास डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है और ए बी को डिवाइड करता है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर पी के, कुछ भी मान सकते हैं, such that a into p just equal to b, and similarly if b divides c, if there exists some integer q, then b times q will be equal to c। तो इसका मतलब है b is just equal to a times some integer p, and this c is just equal to b times of q। okay, where this is p q are some integers, okay, सम इंटीजर्स। अब यहां से हमको क्या दिखाना है कि दैट सी इज आल्सो सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, देन वी कैन से ए डिवाइड सी। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सी को हम ऐसे लिखते हैं, सी इज इक्वल टू बी टाइम्स क्यू, तो बी की जगह पर हम ए पी लिख सकते हैं, तो दिस इज ए इंटू पी ऑफ क्यू। तो दिस इंप्लाइज दिस इज सी इज जस्ट इक्वल टू ए टाइम्स पी क्यू, एंड पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स, है ना, तो उनका प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, दैट इज योर c इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ a, देन यू कैन से दिस a डिवाइड c, या यू कैन से c डिविजिबल बाय a। तो दिस इंप्लाइज c इज डिविजिबल बाय a, है ना, और दिस इंप्लाइज दैट इज a comma c is belongs to R, and this implies R is transitive। समझ में आया? ठीक है, तो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट सिमेट्रिक एंड इट इज आल्सो रिफ्लेक्सिव, बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, अगर यहां पर जीरो इंक्लूड होता है इस सेट के अंदर, तो वो हमारे पास इस रिलेशन के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं बनाता। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर बोला है 1 + xy इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर जो भी सेट है, दैट इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। यहाँ पर जो ए है, ये हम ए बोलते थे ना, ए सेट ऑन, तो दैट इज योर क्यू। ओके, क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, and R is the relation defined at that is x will be related to y if x plus x 1 plus xy is positive greater than 0, or you can say x into y is greater than -1, then prove that this relation R is reflexive and symmetric but not transitive। ये रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो अगर हम एक्स कोई नंबर ले रहे हैं, कोई भी हम रेशनल नंबर ले रहे हैं,
और उसको खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट विल बी सम पॉजिटिव नंबर, बिकॉज अगर निगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा, और उसमें वन ऐड करेंगे तो दैट द नंबर विल बी पॉजिटिव इनफ। ओके, अगर हम जीरो ले रहे हैं तो जीरो होगा, तो जीरो प्लस वन विल बी सम पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब है एवरी रेशनल नंबर विल रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओके, तो अगर x इंटू वाई प्लस वन पॉजिटिव आ रहा है तो y इंटू एक्स प्लस वन भी पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा, बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। तो लेट्स राइट द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। सो कंसीडर एनी element x and y in Q. Okay, so here since you can say, since 1 plus x into x कोई भी हमने ले लिया, कोई भी रेशनल नंबर ले लिया, is just equal to 1 plus x square. Okay, which is greater or equal to 1, 1 ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि x या तो जीरो हो सकता है या फिर कोई नॉन जीरो नंबर, उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, या यू कैन से नॉन नेगेटिव रहेगा, तो इन दोनों का सम हमेशा ग्रेटर इक्वल टू वन रहेगा, एंड दैट विल बी यू कैन से ग्रेटर देन जीरो। so this implies this 1 plus x into x is positive, and this implies this is x is related to x for every x in Q. इसका मतलब x comma x is belonging to R for all x in Q. Okay. तो दिस implies R is reflexive. तो प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर लिया, R is reflexive. ठीक है, नेक्स्ट वी कैन शो हेयर, so let that is your x comma y is related to R। इसका मतलब ये हुआ कि दिस वन प्लस एक्स इंटू वाई इज पॉजिटिव, है ना, x y से रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब x वन ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, कंडीशन, अच्छा x y लिख रहा हो, y x भी लिख सकते हो, तो इसको जो प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन होता है वो कम्यूट करता है, तो वन प्लस वाई एक्स इज पॉजिटिव ऑब्वियसली, तो दिस इंप्लाई दिस इज y comma x is also belonging to R relation set. Okay, so this implies it is symmetric. So thus you can say this is x comma y which is belonging to R. This implies this is y comma x will also belong to R. So this implies R is symmetric. R is symmetric. Clear? So it is not transitive. ये हमको प्रूव करना है, but R is not transitive. Is not transitive. ओके, सो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल ले लें, तो सिंस दिस माइनस वन कमा जीरो, ठीक है, तो x की जगह पर हम अगर माइनस वन ले रहे हैं और y की जगह पर हम जीरो ले रहे हैं, तो ये हमारे पास माइनस वन इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और जीरो प्लस वन विल बी वन विच इज ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब माइनस वन और जीरो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ओके, एंड दूसरे में हमने क्या ले लिया, अब यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे जीरो है, तो जीरो और टू को ले लिया, तो जीरो और टू भी एक दूसरे से रिलेट करके जीरो और टू का प्रोडक्ट जीरो और प्लस वन वन आ जाएगा विच इज आल्सो पॉजिटिव। तो दीज टू जो पेयर्स हैं दैट विल बी बिलोंगिंग टू द रिलेशनशिप, बट अगर माइनस वन और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आएगा, सॉरी माइनस टू आएगा, माइनस वन और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू आएगा, उसमें प्लस वन करेंगे तो माइनस का वन आएगा, और माइनस वन विल बी लेसर देन जीरो, तो इट मीन्स दिस माइनस वन एंड टू विल नॉट रिलेट टू ईच अदर। ओके, सो यू कैन जस्ट से, पहले तो इनकी कंडीशन लिख देते हैं, बिकॉज we have 1 plus minus 1 into 0 which is positive, and clearly you can have 1 plus 0 into 2 which is also positive, but
but this point -1 will not relate to 2. It will not belonging to R. क्यों? क्योंकि ये निगेटिव आ जाएगा, बिकॉज दिस इज 1 प्लस -1 इंटू 2 which gives -1 which is lesser than 0. तो इट मीन्स इट नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस तो एग्जिस्ट कर रही बट कंक्लूजन इज नॉट इन द आर, तो दिस इंप्लाई दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हेंस in the relation R is reflexive, it is reflexive, है ना, and symmetric but not transitive, but not transitive, ये ट्रांजिटिव नहीं। क्लियर? गॉट इट? समझ में आ गया? तो आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर पे हम ले रहे हैं। दिस इज आर, आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आर, यहाँ पर ध्यान देना जो सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंटेशन हम डिफरेंट तरीके से आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, bold R you can say. So R be the relation on the set of real numbers. R is defined as A will be related to B if modulus of A is less or equal to B. Then so that R is neither reflexive nor symmetric but transitive. ये transitive है but ना ही ये reflexive है ना ही symmetric है। तो आइए फटाफट इनके काउंटर एग्जांपल्स लिखते हैं। So R is not reflexive. R is not reflexive. So take be just taking here A is equal to -1। ये बराबर हम क्या ले रहे हैं, हमने -1 ले लिया सपोज। तो -1 का अगर मॉडुलस करेंगे तो हमारे पास +1 हो जाएगा, दैट विल बी +1 इज नॉट लेस और इक्वल टू -1, दैट इज ग्रेटर देन -1। ओके, तो इसका मतलब है -1 विल नॉट रिलेट टू इटसेल्फ। तो एक हमको पॉइंट मिल गया रियल नंबर्स में जो कि खुद से रिलेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। So we note that this is -1 with -1 is not in set of in the relation set, because this modulus of -1 is uh, -1 is false, it's wrong, right? This is a wrong relation. So 1 is less or equal to -1 is wrong. Okay, so R is also not symmetric, is not symmetric। कैसे, उसके लिए देख लेते हैं हम लोग। 1 is related to 2 but 2 is not related to 1। तो इसको देख लेते हैं। ये भाई ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रही, नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, उसको दिखाने के लिए हमने काउंटर एग्जांपल में हमने ले लिया a is equals to 1 and b is equals to 2। You can clearly see then modulus of 1 will relate is less or equal to 2, and you can just say this is 1 is less or equal to 2, this is true, is true। ट्रू का मतलब है कि दिस 1, 2 is related to R, okay, but this 2, 1 it does not relate to R, ठीक है, because you can just say कि this 2 modulus of 2 is not less than 1, that is greater than 1 ना। Modulus of 2 is less or equal to 1 is a wrong statement, it's wrong। तो इट मीन्स 1, 2 बिलोंग करेगा बट 2, 1 बिलोंग नहीं करेगा, तो इट इज नॉट सिमेट्री। पहला हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड में ट्रांजिटिव की बात करें तो इट इज ट्रांजिटिव, वी हैव टू शो दैट।
तो R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। तो आइए जरा, तो उसके लिए हम सिंपली दिखा लें, इफ we just taking pairs that is A comma B which is in R, so and we have this is B is related to C which is in R, so then you can say this is modulus of A is less or equal to B, and this is modulus of B is less or equal to C. So clearly you can say this implies mod of A is less or equal to C. So this implies this is A comma C is in R. So this implies this is R is transitive. एक चीज बताइए, if modulus of A is less or equal to B, तो definitely this B is some पॉजिटिव नंबर। ओके, क्योंकि निगेटिव नंबर होती तो हमारे पास मॉडुलस पॉजिटिव होता है तो उससे कम नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका मतलब या तो बी जीरो है, ए जीरो है। ठीक है, अदरवाइज इट इज अ पॉजिटिव नंबर, और फिर मॉडुलस ऑफ पॉजिटिव नंबर विल बी सेम एंड विच इज आल्सो लेस देन सी, दैट इज आल्सो पॉजिटिव नंबर। ओके, तो इट मींस मॉडुलस ऑफ ए विल बी आल्सो लेसर देन सी, तो दिस ए विल बी रिलेटेड टू सी। इसका मतलब आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? गॉट इट? तो आई थिंक कि you understood well how to check the reflexivity, symmetricity and transitivity. Okay, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन को लेकर। कुछ है प्रॉब्लम्स? ठीक है। ओके, सो सॉरी, ये भाई स्क्रीन कहाँ जा रही है? हाँ बस। So let's solve the question number 9. Okay. So let Z be the set of all integers and R be a relation on Z defined by it A is related to B if A minus B divisible by 5. Okay. And prove that R is an equivalence relation. तो आपको प्रूव करना है कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जेड रिलेटेड टू वन। इसका मतलब क्लास ऑफ एलिमेंट वन आपको बतानी है कि वन की क्लास क्या होगी, वन एलिमेंट की क्लास क्या होगी। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन वी हैव टू फाइंड। ओके, सो लेट्स बिगिन विद राइट द सॉल्यूशन। सो आई एम जस्ट राइटिंग, कंसिडर थ्री एलिमेंट, क्योंकि जनरल वे में हमें प्रूव करना होगा। तो आई एम जस्ट टेकिंग एनी थ्री एलिमेंट्स ए, बी एंड सी which is in set of integers. So first, because a minus a will be equal to 0, which is divisible by 5. 0 divisible by 5. Okay. इसका मतलब every integer related to itself. So it is reflexive. So you can just write in this way. Since a minus a is just equal to 0, and 0 को आप लिख सकते हो 5 into 0, it means it is divisible by 0. So this implies this is a minus a is divisible by 5. Okay. This implies this is your a comma a is belonging to R, है ना? और this implies R is reflexive. तो हर एक इंटीजर खुद से रिलेट करेगा विद दिस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करना है। तो इफ a is related to b, it it means a minus b divisible by 5. Then negative of a minus b is also divisible by 5. So it means b is also related to a. So you just write here. So let a comma b is related to R. This implies this is a minus b is divisible by 5. Okay, and this implies we have this is a minus b is equals to 5 times q,
है ना, फॉर सम इंटीजर q in the set of integers. ओके, दिस इंप्लाइज दिस इज b माइनस ए, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू कैन जस्ट राइट दिस इज 5 टाइम्स माइनस ऑफ q। तो माइनस, अगर q एक इंटीजर है तो माइनस q भी एक इंटीजर होगा। तो यू कैन इजिली से दिस इज b माइनस a इज डिविजिबल बाई 5। ओके, और यहाँ पर आप लिख दीजिए क्यों, सिंस q इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, तो दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ q विल आल्सो बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब b माइनस ए इज जस्ट इक्वल टू 5 टाइम्स सम इंटीजर, तो इसका मतलब 5 विल डिवाइड टू b माइनस ए। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास a माइनस बी वहां पर है, देन b माइनस ए भी वहां पर मौजूद होगा। तो a माइनस बी बिलोंगिंग टू R, this implies this B minus A is belonging to R. So this implies R is symmetric. Symmetric. Clear? नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी प्रूव करते हैं। तो नंबर थर्ड, लेट, अब यहाँ पर दो पेयर है, मतलब A is related to B and B is related to some another C। अब हमको क्या दिखाना होगा, A is also related to C। So we have here this A comma B is related to R and this B comma C is related to R। ओके, तो हमने दो पेयर ले लिए जो इस तरीके से बिलोंग करते हैं। अब हमको देख, इट मीन्स व्हाट, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ओके, एंड दिस b माइनस c इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, so this implies there exists some integers p and q such that 5 times p is equal to a minus b and 5 times q is equals to b minus c। So you can just have in this way। So this is a minus b, q और q dash मान लो, this is 5 times of q and b minus c को 5 टाइम्स q dash मान लो। यहाँ पर q और q dash हमारे पास इंटीजर्स हैं, और सम इंटीजर p q के कुछ भी मान सकते हो, यू कैन टेक एनीथिंग। तो हम देखेंगे यहाँ q and q dash is belonging to set of integers। okay, so this implies अगर हम ऐड करते हैं इन दोनों को, a माइनस बी प्लस दिस इज b माइनस सी एंड दैट इज इक्वल टू दिस इज 5 टाइम्स q प्लस q डैश। ओके, एंड दिस इंप्लाई यू कैन से a माइनस सी इज जस्ट इक्वल टू 5 टाइम्स q प्लस q डैश, क्योंकि हमारे पास q और q डैश इंटीजर्स हैं तो उनका सम भी इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो यू कैन इजिली से दैट इज a माइनस सी is divisible by 5। ठीक है, तो सिंस दिस इज q एंड q डैश इज बिलोंगिंग टू z, दिस इंप्लाइज इनका सम भी z के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है a माइनस सी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5। तो दिस इंप्लाइज दिस a माइनस सी डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब है a comma c is in R। okay, so thus this relation is transitive। thus if a comma b is in R and this is b comma c is in R, so this implies that a comma c will also belonging to R। so this implies R is transitive, clear? So this is transitive, so therefore this relation is equivalence because it is reflexive, symmetric and transitive। so therefore the relation R is reflexive
reflexive, symmetric and transitive. So hence it is an equivalence relation. It is an equivalence relation. क्लियर? तो ये तो प्रूव कर लिया कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब हमको क्या फाइंड करना है? एलिमेंट्स इन जेड विच इज रिलेटेड टू वन, जो वन से रिलेट करते हो, है ना? यू कैन से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट वन. तो नाउ टू फाइंड एलिमेंट्स ऑफ जेड रिलेटेड टू वन, ये हमें करना है. तो consider any element which is related to 1, it means a minus 1 is divisible by 5, है ना? तो any a belonging to z such that this is a comma 1 is in R. So this implies this is a minus 1 is divisible by 5. This implies a minus 1 is just equal to 5 times q. Q is integer, where q is some integer, where this is q is belonging to set of integer, है ना? तभी तो हम कहेंगे कि दिस 5 डिवाइड्स a minus 1, है ना? तो दिस implies what? This implies this is a is just equal to 1 plus 5 times q. अब q कोई भी इंटीजर है, q हम इंटीजर रखते चले जाएंगे तो हमको नंबर्स मिलती चली जाएंगी जो कि 1 से रिलेट कर रही हैं, है ना? तो putting this q is just equal to integers, all integers. This is 0 1 2 3 up to सारे के सारे इंटीजर रख रख के देखिए, तो जो नंबर्स मिलेंगी दैट वेयर वी गेट द नंबर्स. अगर हम 0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 6 मिलेगा, 11 मिलेगा, एंड इट इज तक -4 मिलेगा, -9 मिलेगा. तो ये जो नंबर्स हैं दैट विल बी रिलेटेड टू 1. तो hence you can have the set of all elements set of elements of z related to 1 is just equal to this set. Okay, -9, -4, है ना, 1 6 11 16 and so on. Okay, and this is also, you can't say this is class of 1 with this equivalence relation. Okay, got it? So this is the elements which is related to 1 with this relation, that a minus b divisible by 5. तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा डिटेल में जो सोल्यूशन हमने करा है. जस्ट आल्सो स्टार्ट राइटिंग एंड प्रैक्टिसिंग द रिजल्ट्स सोल्यूशन. ओके, तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं. So that the relation are defined by that a comma b related to c comma d. तो यहाँ पर पेयर्स हैं, है ना? If and only if this a plus b is just equal to b plus c on the set n cross n is an equivalence relation. तो ये हमारे पास, अब हम किस पे काम कर रहे हैं? अभी हम सेट ए एक सिंगल सेट ले रहे थे, अभी हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं एन क्रॉस एन. तो अब हमारे पास ये जो एन क्रॉस एन है, दिस इज लुक्स लाइक अ सेट ए. तो अब हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो पेयर टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, और दो पेयर आपस में रिलेट करेंगे. इसका मतलब जो आर है, तो आर के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, दिस ए कमा बी, एक ए पेयर हो गया विच इज रिलेटेड टू द पेयर सी कमा डी. सो दिस होल पेयर इज बिलोंगिंग टू नाउ इन आर. ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो एक पेयर है, और एक पेयर किसी दूसरे पेयर से रिलेट कर रहा है. इफ ए प्लस डी, है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म इन द सेकेंड वन,
सम इज जस्ट इक्वल टू बी प्लस सी। तो ए और ए और ए और डी का जो सम है दैट शुड बी इक्वल टू बी, देन यू कैन से दिस पेयर ए कमा बी इज रिलेटेड टू सी कमा डी। तो ये है, तो इस रिलेशन को प्रूव करना है कि दिस इज योर दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। और यहाँ पर n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, तो ये हम नेचुरल नंबर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स राइट द सॉल्यूशन। तो कंसीडर एनी पेयर ए कमा बी हमने ले लिया, सी कमा डी ले लिया, और हमने एक ई कमा एफ, हमने थ्री पेयर्स ले लिए इन दिस, यू कैन से थ्री एलिमेंट्स इन दिस, ओके। अब हमको पहला दिखाना है इट इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव क्योंकि दोनों पेयर सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट विद लास्ट एंड सेकेंड विद द फर्स्ट यू विल गेट द सेम थिंग, ओके। सो सिंस यू कैन जस्ट हैव सिंस a plus b will be equal to b plus a, ध्यान देना हमने सेम पेयर लिया है, मतलब हमने a कमा b लिया है इन द टू बोथ द प्लेसेस, है ना। तो यहाँ पर c कमा d है ये, तो यहाँ पर एक ये वाला हम जब ऐड कर रहे हैं तो दिस इज a विद b एंड दिस b विद a। तो दोनों का क्योंकि कम्यूटेटिव होता है तो a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a फॉर ऑल दिस इज a comma b which is from set of natural number। इसका मतलब जो पेयर ले रहे हैं वो a comma b from n क्रॉस n। तो ये क्यों, क्योंकि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्लियर। So here we have, so this implies this is a comma b is related to a comma b for every pair in n cross n. So this implies this is r is reflexive। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया, अब इसको दिखाना है सिमेट्रिक। सो सेकेंड वन वी जस्ट हैव द पेयर a comma b is related to the pair c comma d। तो आई एम जस्ट टेकिंग लेट this is a comma b is related to the pair c comma d, okay, and this implies we have a plus d is just equal to b plus c, है ना। हमको क्या दिखाना है दैट c comma d is also related to a comma b, ओके। तो इनको हम चेंज कर दे रहे हैं, तो यू कैन जस्ट से a plus d को हम लिख सकते हैं d plus a is equals to c plus b। यू कैन जस्ट राइट इन दिस वे, हम कम्यूट कर सकते हैं, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो यू कैन जस्ट राइट इन दिस वे। तो हेयर यू कैन जस्ट सी दैट c plus b, हाँ, is just equal to d plus a, है ना। रिवर्स से तो यू कैन जस्ट से दिस c कामा d, यहाँ पर अब ए और बी की पोजीशन क्या ले लिया c और d, तो दिस इज c कामा d इज रिलेटेड टू a कामा b। इसका मतलब ये सिमेट्रिक बन गया, है ना। तो 10, तो 10 यू कैन जस्ट से 10 a comma b is related to c comma d, this implies this c comma d will relate to a comma b, and this implies r is symmetric, r is symmetric, clear। तो सिमेट्रिक प्रूव हो गया, अब हम क्या प्रूव करना है आपको, ट्रांजिटिव फॉर द इक्विवेलेंस रिलेशन। सो लेट दिस इज a comma b is related to c comma d, okay, and this c comma d is related to another pair e comma f। तो अगर रिलेट करता है तो इसका मतलब दे हैव दिस कंडीशन। तो दिस इंप्लाइज दिस इज a plus d is just equal to b plus c, and from here you can have c plus f is just equal to d plus e, okay। तो अगर हम ऐड ऐड ऑन कर देते हैं
दोनों तरफ ये a प्लस डी विल बी एडेड टू c प्लस एफ, तो ऐड कर देते हैं। ये दोनों जो इक्वेशन मिली दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दिस इज a प्लस डी प्लस c प्लस एफ इज जस्ट इक्वल टू b प्लस c प्लस d प्लस एफ e। ओके, you will get like this. ओके, तो जो कॉमन है दैट कैंसिल इट आउट। तो यहाँ से यहाँ डी और सी कैंसिल हो जाएगा, डी एंड सी, एंड यहाँ पर डी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा ए प्लस एफ इज जस्ट इक्वल टू बी प्लस ई। एंड दिस इंप्लाइज ए विद बी, मतलब ए कमा बी इज रिलेटेड टू ई विद एफ, है ना। इनको अगर हम कम्यूट करके देखें तो दिस इज डी एंड दिस इज योर सी, तो दिस इज ई कमा एफ, दे रिलेटेड विद ई कमा एफ। तो अगर हमारे पास ए कमा बी रिलेटेड टू सी कमा डी एंड सी कमा डी रिलेटेड टू अनदर ई कमा एफ, देन दिस ए कमा बी विल बी रिलेटेड टू ई कमा एफ। तो ये ट्रांजिटिव कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो दिस thus you can say that a comma b is related to c comma d, and this c comma d is related to e comma f. Okay, this implies this is your a comma b is related to e comma f. So this implies r is transitive. R is transitive. क्लियर। तो दिस इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इट इज मीन्स इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। You can just have it is an equivalence relation. So therefore the relation R is reflexive, symmetric, and transitive, hence it is an equivalence relation. Equivalence relation. Okay, so this is your some problems, solution of some problems. Okay, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वो सिलेबस के अंदर भी है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, है ना। जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस होते हैं वो भी हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशंस होते हैं। तो लेट अस सी कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस होते क्या है, कि एक ए बी के कॉन्ग्रुएंट कब होगा, मॉडुलो ओवर एन। ठीक है, तो उसके ऊपर हम डेफिनेशंस डिफाइन करते हैं, देन वी जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो द कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन जो आपके सिलेबस के अंदर भी है, इस टाइप का रिलेशन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन बेसिकली। तो एक ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन if and only if this is a minus b divisible by n। अगर हम n से, या यू कैन से n डिवाइड्स a माइनस b, दिस सिंबल इट मीन्स n divides, okay, then we can say is congruent to b, या you can say is related to b. So this is called congruence relation between a and b, and here a and b are taken from integer, they are integers। Okay, so let's define first the congruence modulo n। n is any positive integer, या you can say any natural number, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और a b any integers है। तो if a minus b divisible by n, then we say this a is congruent to b modulo n। okay, so let n be a positive integer and a comma b are integers, set of all integers, then a is said to be congruent to b modulo n, or which is written at a congruent to b modulo n, mod n ऐसे लिखा जाता है।
ओके, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी डिविजिबल बाई एन। तो ये जो रिलेशन होता है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लेट, अभी हमने जो पढ़ा था ना, दैट ए माइनस बी डिविजिबल बाई 5, तो यू कैन आल्सो से दिस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 5, यू कैन जस्ट से। तो वहां पर ए जो बी से रिलेट करेगा उसमें ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा विद द मॉडुलो 5। तो यहाँ पर एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख के हम कॉन्ग्रुएंस निकाल सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशन कांग्रेस मॉडुलो एन। तो इस रिलेशन को हम प्रूव करेंगे कि ये रिलेशन हमारा कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ओके, तो लेट अस प्रूव इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हम इसी प्रॉब्लम को लिख रखा है कांग्रेस मॉडुलो एन के ऊपर। ओके, अरे भाई रुको। ओके, तो यहां पर है लेट z be the set of all integers and n be a positive integer and r be a relation on set of integers defined by r, that a is related to b and a and b from the integers obviously, then a minus b divisible by n, then we can say a is congruent to b। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है दैट इज कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। ओके, तो प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है दैट इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो लेट अस प्रूव दिस रिलेशन, दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो लेट अस प्रूव। तो वी आर वर्किंग इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो राइट द सॉल्यूशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो लेट अस प्रूव इट। तो कंसीडर एनी थ्री elements, three integers, that is a, b and c, which is belonging to set of integers। ओके, तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा, सिमेट्रिक प्रूव करना होगा और ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा। ठीक, सो सिंस यू कैन इजिली से दैट इज a minus a is just equal to 0, you can just say this is 0 times n। तो this implies that is a minus a is divisible by n, is divisible by n। हम a माइनस ए को n से, क्योंकि a माइनस ए कोई इंटीजर से घटाएंगे वो जीरो आएगा, एंड एवरी जीरो डिविजिबल बाई नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस ए डिविजिबल बाई n। तो दिस इंप्लाइज दिस पेयर a कमा a इज इन r, है ना, रिलेशन सेट के अंदर रहेगा। दिस इज, इट मींस r इज रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब एवरी इंटीजर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। आइए सिमेट्रिक को देखते हैं जरा। सो लेट अ पेयर दैट इज योर ए कमा बी विच इज इन आर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट इज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन। एन से वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओके, तो a माइनस बी डिविजिबल बाई n, वो n से डिविजिबल है। तो अगर n से कोई नंबर डिविजिबल है तो इसका मतलब है दिस a माइनस बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, मतलब n में कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके a माइनस बी बना है। ठीक है, सो वी कैन जस्ट टेक हियर, तो दिस इंप्लाइज दिस इज a माइनस बी इज जस्ट इक्वल टू n टाइम्स q। q कोई भी इंटीजर है, तो फॉर सम q इन सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो अगर हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू एन टाइम्स क्यू, और उसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, दैट इज माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, तो माइनस a, तो b माइनस a जस्ट इक्वल टू n टाइम्स माइनस ऑफ q। और क्योंकि हमारे पास
क्यू एक इंटीजर है तो निगेटिव टाइम्स क्यू विल बी एक इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, तो यहां से आप ये कह सकोगे दिस इंप्लाइज बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय एन। वो एन से डिविजिबल है। क्यों? सिंस q is belonging to set of integer, this implies minus of q is also belonging to set of integer। तो यहां पर it means this b minus a is the integral multiple of n, it means n it divides b minus a। ठीक है, ओके, तो ये इसको डिवाइड करेगा, तो दिस implies you can just say, thus you can say, thus this is a comma b is belonging to r, this implies this b comma a is also in r, है ना, और दिस implies r is symmetric। तो रिफ्लेक्सिव देख लिया था, ये सिमेट्रिक भी हो गया, ये सिमेट्रिक। क्लियर? अब आते हैं थर्ड, ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिव के रिलेशन तो हमने दो पेयर्स लिया, दैट इज ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। अब हमको क्या दिखाना होगा? ए इज आल्सो रिलेटेड टू सी। So let we have the pair A comma B is in R and this B is related to C, which means is in R। So इससे ये पता चलता है that A minus B divisible by N and B minus C is also divisible by N। ठीक है, so that is your A minus B is by divisible by N, okay, and this is B minus C is divisible by n। ठीक है, तो दिस इज a minus b divisible by n and b minus c is also divisible by n। it means there exist two integers। अगर इसमें हम q और q dash मान ले रहे हैं, तो there exist two integers q and q dash such that if you are multiplying with n with q you will get a minus b and n with q dash you will get b minus c। ओके, तभी तो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो दिस implies this is a minus b is some integral multiple of n, it means n times q, and this b minus c is just equal to some integral multiple of n, this is q dash। ठीक है, for some integers, some integers q and q dash is set of integers। okay, अब इन दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिए, इफ यू आर एडिंग इन दिस, तो इट इज a minus b and plus this is b minus c। okay, it's just equal to, if you are n taking common then you get q plus q dash। okay, q plus q dash, क्योंकि हमारे पास q and q dash इंटीजर है तो उनका सम भी एक इंटीजर होगा। और लेफ्ट साइड में तुम्हारे पास क्या बचेगा? b माइनस b और b कैंसिल, तो ये हो जाएगा a माइनस c जस्ट इक्वल टू m टाइम्स q प्लस q dash। so this implies you can say, because n is the integral multiple gives a minus c, so this implies this a minus c is divisible by n, है ना, वो n से डिविजिबल है। ओके, यहाँ पर लिख दो आप, सिंस this q and q dash from set of integers, so this implies sum of these integers is again a integer। okay, so here you can say a minus c is integral multiple of q plus q dash। okay, integral multiple of n, so this implies n divides a minus c। yeah, you can say a minus c divisible by n। okay, so this implies this is a comma c is belonging to r, है ना, और ये अगर r से बिलोंग करता है तो this implies thus you can say thus एक सेकेंड, दो बार implies नहीं लिखा जाता है ना, just a second।
Please wait a second. Okay. So thus you can say that is if A comma B is in R and this B comma C is in R, then this implies that is A comma C will be in R. Or this implies R is transitive. Is transitive. तो इट मीन्स दैट कि जो कॉन्ग्रेंस रिलेशन होता है दैट इज दैट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, इट मीन्स इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो ये हमने प्रूव कर लिया। ठीक है। सो तो प्रूव करने के लिए एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो है आपका वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप उसको इसी तरीके से जैसे हमने शो करा है रिफ्लेक्सिव के लिए, सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए, आप ऐसे ही इसको प्रूव करेंगे। ठीक है। तो देयरफॉर the relation R is reflexive, symmetric and transitive. So hence you can say it is an equivalence relation. अरे भाई, राइटिंग खराब हो जा रही है यहाँ पे। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा, और ऐसे ही आप अपनी एक्सरसाइजेस को करिए, और कोई डाउट होता है तो लेट मी नो। ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लर्निंग।